Good morning, dear kids. I'm taking your 14D, that is your equation of a line, chapter number 14D. In that, we will study about, we have already done actually, y is equal to mx plus c. This is the standard form of writing an equation. Then how to find slope and y-intercept. My dear kids, the value of m will be called as slope and this c will be called as your y-intercept. Is that clear? So in that case, if you have your first as y is equal to 4, in that how is the equation, my dear kids? Equation will be y is equal to x is not there, so can I take it as 0x plus 4? So the value, the coefficient of x will be called as your slope. So here slope is 0. So you can say slope is 0 and your y-intercept is 4. Is that clear? Okay, so similarly you have to do your second and third by equating, you're making your equation in the form of y as a subject and y is equal to mx plus c, and then make the coefficient of x as your slope and your c, that is a constant term, will be your y-intercept. Clear? Shall we jump on to next? And next says the equation of a line x minus y is equal to 4. Find its slope and y-intercept. Same. X minus y is equal to 4. That is minus y is equal to 4 minus x. And y will be equal to minus 4 plus x. In that case, you got your slope. x का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि आपको ऐसे लिखना है, तो हम वैसे लिखेंगे. दिस इज योर कांस्टेंट टर्म दैट इज -4. दिस विल बी कॉल्ड एज y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज योर y इंटरसेप्ट. द कांस्टेंट टर्म इज योर y इंटरसेप्ट and your x coefficient will be called as slope. So in this case your slope is 1, my dear kids, and y-intercept is -4. And now you have to find the inclination angle also. You know inclination is what? Tan theta. Always tan theta is equal to slope. Slope is given as 1. Tan theta is 1. From your tables just make it out. इन योर टेबल tan 1 कब आता है, तो आप नोटिस करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो दैट वे यू गॉट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इट इज अ इंक्लाइनेशन एंगल. An inclination angle, so that is 45 degree. Clear with this? Shall we jump on to next? And that goes for problem number 3. Is this line 3x plus 4y plus 7 perpendicular to the line this? Now for this you know the lines which are perpendicular will have the slope m1 into m2 is equal to -1. Getting my point clear? तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपको पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा. आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखो. दैट मीन्स y को सब्जेक्ट बनाना है, माय डियर किड्स, एंड दैट विल गो समथिंग लाइक दिस. अब ये जो 4 है ये दोनों के नीचे है, सो y इज इक्वल टू -7 अपॉन 4 -3x अपॉन 4. इज दैट क्लियर? x का जो कोएफिशिएंट है -3 अपॉन 4 दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्लोप. सो स्लोप m इज इक्वल टू -3 अपॉन 4 एंड योर कांस्टेंट टर्म विल बी योर y इंटरसेप्ट दैट इज -7 अपॉन 4. इज दैट क्लियर, माय डियर किड्स? सो यू गॉट द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ योर अनदर लाइन ऑल्सो. That is 28x minus 21y plus 50 is equal to 0. y को सब्जेक्ट बनाओ, बाकी सब टर्म्स को वहाँ पे ले जाओ. नीट y आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी माइनस साइन ऑल्सो. माइनस y is not allowed. You have to keep it neat y. So you will notice you are getting a slope of line which is y is you are getting a slope from this equation, that is 28 upon 21. Once you do it, okay, I'll help you to do it. Just remember your slope for the previous equation, that is 3x plus 4y plus 7 is equal to 0, is -3 by 4. Now we are finding this equation. 28x minus 21y plus 50 is equal to 0. Minus 21y को इधर ही रखना है and you have to take your 28x here. So it will be minus 20x minus 50. Next y को इधर ही रखना है, minus 28x minus 21 minus 50 minus 21. Getting my point clear? This minus minus cut, तो ये हो गया plus 50 upon 21, that's your constant term. ये minus minus cut, it will be 28 upon 21x. y is equal to 28 upon 21x plus 50 upon 21. That's your equation. And as I said you, x का जो coefficient होगा 28 upon 21, that will be your slope. Clear? So here
यू गॉट स्लोप, एक स्लोप आपका आया है 28/21, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। और पहले वाले का स्लोप अगर आप रिमेंबर करें, इस वाले का, दिस इक्वेशन, यू गॉट द स्लोप एज आई गेस -3/4। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -3/4 into 4/3, you're getting -1. That means these lines are perpendicular. If you get the product of two slopes of two equations then is equal to -1, then they will be called as perpendicular lines. Is that clear? Similarly, you have to do your second and you have to do your third. The only thing in third is that, is this line parallel to this? That means the slope of this equation and slope of this equation should be equal. ठीक है ना, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है. इज दैट क्लियर? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस. ओके, नाउ वी हैव, आपको बताना है कि इस लाइन के कोई अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा. तो नेचुरली पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, तो आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे. x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0. दैट विल मेक 2y इज इक्वल टू x - x - 3, y इज इक्वल टू -x/2 - 3/2. -x/2 मतलब -1x/2. तो x का कोएफिशिएंट क्या है माय डियर किड्स? दैट विल बी कॉल्ड एज स्लोप, -1/2. Am I clear? And what is y-intercept? Y-intercept is -3/2. Y-intercept. Clear with this? Similarly, you have to find the slope of this also. How you will find the slope of this? First, you have to convert this into a linear equation. Can I go for this? So I'll get 3x minus 2y is equal to 6. I'll keep my 2y on my left hand side, 3x here, so it will become something like this. And I'll get my y here minus 3x upon this minus 2 here in division with 3 also, with 6 also. So I got the coefficient of x as minus कट कर दो तो x का coefficient हो जाएगा 3/2. So that will be called as slope. Am I clear with this? Are you getting my point? How I am doing the slope? I am comparing it with mx plus c. Y is equal to mx plus c, and m is the coefficient of x. So whatever number you will get as a coefficient of x, that will be called as a slope. Clear? And this c is a constant term, that is the y-intercept. तो जहाँ पे जो plain number आएगा यहाँ पे constant term, that will be called as a y-intercept. Clear with this? Okay, we have find the slope of line which is perpendicular to this. अब इसका slope find करो और इसके perpendicular जो line होगी उसका, ये अगर x minus y/2 + 3 ये line है, ठीक है, तो इसका पहले slope find करेंगे. So you will get something like this. See, remember that you have to remove the negative sign from y also. So how you will do it? You have to take that towards down. So you have to take this negative sign here as -1, here as -1. ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. So it will be 2x plus 6. So you got your equation as y is equal to 2x plus 6. That means you got the slope as 2. Am I correct? So once you got this slope, now what they have said that you need a slope of a line which is perpendicular to this line whose slope is 2. So we do not know the slope of that perpendicular line. So we can write m1 into m2 is equal to -1. And from there you have a slope of one line, that is 2, and m2 you do not have a slope of other line which is perpendicular to this line. So we have to keep the equation like this. From there you will see m2, that is the slope of other line, you are getting -1/2. If I take this 2 down, I'll get -1/2. Got my point clear?
तो होता क्या है, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, सिर्फ जो स्लोप आपको फर्स्ट लाइन का आया है उसका रेसिप्रोकेट करके उसको नेगेटिव साइन लगानी है, दैट विल बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. क्लियर? Similarly, you have to do your second. Next I have find the value of P if lines whose equations are this and this are perpendicular to each other. तो चलो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो एंड दे आर परपेंडिकुलर. इसका जो स्लोप आएगा नेम इट एज m1, इसका जो स्लोप आएगा सेकंड इक्वेशन का नेम इट एज m2 एंड द इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस. Once you got the slope of your first and you got the slope of second, make a product as equal to 1, and from there if you cross multiply you will get the value of P. Is that clear? You want me to find out the slope of your second one if you are getting confused. Px plus 3y is equal to 4. So that will be 3y is equal to minus px plus 4. That will be y is equal to minus px upon 3 plus 4 upon 3. So the slope of this equation is minus p upon 3. And what about this? The slope of this equation 2x minus y plus 5 is equal to 0. That is minus 5 is equal to minus 2x minus 5. I want only y, not negative sign also. So that negative sign will go into division. Minus 2x upon minus 1 minus 5 upon minus 1. So my minus signs are all gone. So my answer is y is equal to 2x plus 5. In this way I got the slope of this equation as 2. My dear kids, इसका slope 2 आया है, इसका slope p upon 3 आया है, and they are perpendicular to each other. That means m1, suppose I take this as 2 and this is your m2 as minus p upon 3. इन दोनों का product is equal to minus 1. When you solve this, you will get the value of P. Got my point clear? Next we have the equation of line. The equation of line AB is this. Find the slope of AB. So you can find very well. Calculate the angle that a line AB makes with a positive direction x-axis. मतलब वही है, आपका जैसे ही slope आ जाएगा, सपोज आपका स्लोप आया है 1, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1, मतलब थीटा की वैल्यू आपको आ जाएगी 45 डिग्री. ए बी का सी व्हाट इज कैलकुलेट द एंगल, इट इज़ नथिंग बट द इंक्लाइनेशन. इट इज़ नथिंग बट द इंक्लाइनेशन. तो इंक्लाइनेशन मतलब आपको tan थीटा से उस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है. सो इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर स्लोप, आई एम सॉरी, this is your x-axis, this is your slope. So this slope is making what angle with your x-axis? So that angle is nothing but the inclination, and we know how to find the inclination angle. We always go with tan theta. Clear? Now we have the lines represented by this and this are parallel. So what you will and find the value of P. If they are parallel, so my dear kids, you have to find the slope of first line, that will be called as m1, and you have to find the slope of other line, that will be called as m2. And here the lines are parallel, that means m1 is equal to m2. So whatever your equation you are getting, you will cross multiply and you have to find P. Similarly, you have your next, if the lines this and this are perpendicular to each other, find the value of P. We have done the similar problem before. Next we have a line through A whose coordinates are given to you and B whose coordinates are given to you is perpendicular to line. So this line is perpendicular to line 2x minus 4y is equal to 5. Find the value of B. Now here the thing is, इसका ए बी का आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस हिसाब से आप स्लोप फाइंड करोगे. इस इक्वेशन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से. जैसे हम लोग y को सब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें जो x का कोएफिशिएंट आता है वो स्लोप होता है. सो m2 आप इसका यहाँ से फाइंड करोगे एंड दे आर परपेंडिकुलर. दैट मीन्स m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू माइनस 1 एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. कैन यू डू दैट? यस. Find the equation of line passing through this point and is parallel to x-axis. Now equation of line which is passing through this and it is parallel to x-axis. Okay, so in this problem, find the equation of line passing through this point and parallel to x-axis and parallel to y-axis. First we will see if this line which is passing through these points minus 5 and 7, अगर वो parallel है x-axis के, तो कोई भी line ये आपका x-axis है,
कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है. तो गेटिंग माई पॉइंट, सो वी हैव अ वाई कोऑर्डिनेट हियर. सो योर इक्वेशन विल बी y is equal to 7, because here the x value will be 0. Okay, I'll explain you in one more method. See, if suppose a line is passing, it is parallel to x-axis. Getting my point? So in that case, your x coordinate, it is passing through x-axis, right? अगर parallel x-axis के है, ये parallel line है, तो it is passing through x-axis. So in that case, my dear kids, your x value will be 0 and y value here, what it is there, 7, that will be there. Getting my point? Clear? So this is your suppose x1, y1. And in this case, my dear kids, the slope of a line which is parallel to x-axis, slope of line parallel to x-axis is always 0. Remember that. Getting my point? So once you got the slope and you got x1, y1, how you will make an equation? You have that y minus y1 is equal to mx minus x1. In that case, if you keep y as y, your y1 is 7, m is 0 and x minus x1 is 0. Got my point? So in this case, your equation will become y minus 7 is equal to 0. So that is y is equal to 7. Clear? Shall we take another case? Now in another case, your line is parallel to y-axis. So how you will do it? Now my line is parallel to y-axis. So if I draw a graph like this, so this is the parallel line. Clear? So if it is parallel to y-axis, it will have x coordinate. So x1 will be minus 5 and y will be 0. y1 will be 0. Clear? And such kind of line which is parallel to y-axis, my dear kids, this is your y-axis, will have slope is equal to 1. Getting my point clear? So once you have value of slope, that is 1, you have x1, y1, you have the formula y minus y1 is equal to mx minus x1. This is the equation of a line formula. So y minus y1 is 0, m is 1, x minus 5. So that will be y minus 0 is equal to x plus 5. Am I correct? Fine with this? So such kind of equation you will get when the line is parallel to your y-axis. Clear? Your next is find the equation of line passing through this point, these points, and passing through this point and perpendicular to this. Okay, once you have this this equation is given to you, तो इसका slope निकल जाएगा. ठीक है? So how you will find 4x plus 5y is equal to 6. 5y is equal to 6 minus 4x. Y is equal to 6 upon 5 minus 4 upon 5x. To write it in standard form, we will write it in the form of y is equal to mx plus c. That is y is equal to minus 4 upon 5x plus 6 upon 5. That means coefficient of x minus 4 upon 5 is the slope. Clear? And 6 upon 5 is the y-intercept. We do not need that. So slope you got minus 4 upon 5. Now this slope, अगर ये लाइन का स्लोप है, सपोज ये वाली लाइन का स्लोप है माइनस 4 अपॉन 5, इसके ऊपर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूँ. तो मैंने आपको कहा था जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, सपोज दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर पी क्यू. सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ पी क्यू? ए बी का स्लोप तो आपके पास आ गया माइनस 4 अपॉन 5, बट व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ पी क्यू? पी क्यू का स्लोप वही होगा जैसे मैंने कहा था परपेंडिकुलर लाइन्स का क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1. So what will be m1 you got minus 4 upon 5 into m2 is equal to minus 1. Keep your m2 this side, minus 1 into, yes my dear kids, it will be 5 upon 4, minus 4. Minus minus cut, so it will be 5 upon 4. So what value you got for the slope of PQ? You got 5 upon 4. So once you have your slope of PQ, now you can use that slope and make the equation of PQ. They have asked to find the equation of line passing through this. So ये minus 2 1 के through
क्रॉस हो रहा है. एंड दैट डे ऑल्सो आई सेड यू इफ यू वांट टू मेक इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू शुड हैव वन पॉइंट whose coordinates are given to you and you should have a slope. Getting my point? तो स्लोप आपके पास आ गया है m2 की वैल्यू, मतलब m वो स्लोप है परपेंडिकुलर लाइन का, दैट इज 5/4. Once you got the value of this and you have points that is x1 and y1, you can use y minus y1 is equal to m x minus x1. Put in the values and get one nice equation. क्लियर. द ओनली थिंग इज कि दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x + 5y = 6 वो इसलिए दिया गया है ताकि आप उसका स्लोप निकालें और उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकेट हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन यहाँ पे हट जाएगी क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्लोप -4/5 था. गेटिंग माई पॉइंट. तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आने के लिए आपको एक बेस का इक्वेशन 4x + 5y = 6 दिया हुआ है ताकि उसमें से आप एक स्लोप निकालें. फिर उस परपेंडिकुलर लाइन जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आप प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स = -1 से निकालें. फिर वो जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आया और ये पॉइंट्स -2 और 1 दिए हुए हैं ये यूटिलाइज करके एक इक्वेशन बनाएं. क्लियर. लेट्स सी नंबर 15. Now 15 says that find the equation of a perpendicular bisector of a segment obtained on joining. So you have 6 minus 3 and 0 3 and there's a perpendicular bisector. अब बाइसेक्टर है तो मतलब मिड पॉइंट होगा. तो पहले तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके मिड पॉइंट्स निकाल दो. इफ आई नेम इट एज P. Once you got the midpoints, this line is crossing through this midpoints. तो इसके पॉइंट्स आ गए तो ये बन जाएगा x1 y1. गेटिंग माई पॉइंट. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस AB. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी फाइंड स्लोप ऑफ AB. जैसे ही आपके पास AB का स्लोप आ गया उसको नाम दे दो m1. फिर आप प्रोडक्ट करो m2 के साथ = -1. आपके पास आ जाएगा m2 एज अ स्लोप ऑफ सपोज इफ आई नेम दिस एज PQ. तो आपके पास स्लोप आ गया PQ का. और वो PQ पॉइंट P से क्रॉस हो रही है x1 y1 जो आपका मिड पॉइंट है वो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं. नाउ यू कैन मेक द इक्वेशन y minus y1 = m x minus x1. क्लियर. तो वो PQ का इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि आपके पास P कोऑर्डिनेट्स हैं एंड यू हैव द स्लोप ऑफ PQ ऑल्सो. स्लोप ऑफ PQ आपने कैसे फाइंड किया. स्लोप ऑफ AB फाइंड किया और उसका प्रोडक्ट करके = -1 किया तो स्लोप ऑफ PQ आ गया. Once you got the slope of PQ and you have the coordinates of coordinates of P, any one point coordinate should be there. Slope is required and the coordinates of any one point are required. Then you can just put them into your equation and get the value of get the nice equation. Is that clear? Shall we pack up here? God bless.